मुकाबला From the bottom निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स अब पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे तैयार हो दुनिया के सबसे बड़े ई क्रिकेट गेम रियल क्रिकेट 24 के लिए JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League. Excellent piece of fielding. Oh, he's launched this superbly. देखो 8 जाबाज टीम्स को fighting for glory and 2.51 crores. जब रगों में दौड़े क्रिकेट का जोश और दिल में हो लव ऑफ esports. With real cricket, India gives e-cricket to the world. बुला रहा है जीत का डिजिटल मैदान. Let's go! Catch the action on Jio Cinema. Has been brought into the attack. Looked impossible. That's his 100 on a top-class inning. Excellent fielding. Huge appeal. And he's given it. Gigantic six. Oh, undid the batter with a beauty. Direct hit. He's a gun fielder. He's launched this superbly. परीक्षा देके परिश्रम करके और चुनौतियों का सामना करके ही हमें मिलेगा हमारा वन ट्रू चैंपियन। 3 दिन का सफर, मात्र 3 दिन के सफर के बाद हम चले आएंगे फाइनल स्टेज पे जहां टॉप 4 टीम्स क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगी। बाकी टीम्स के लिए ऑल द बेस्ट। आपको पवेलियन में देखे ही मैच एंजॉय करना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उन टीम्स के लिए जिनके लिए शायद से आखिरी उम्मीद बन के बची हुई है उनके गिने चुने मैचेस। वेल, इसी के साथ साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इन JetSynthesys प्रेजेंट्स द ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग, जो दुनिया का सबसे बड़ा ई क्रिकेट टूर्नामेंट है। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर JetSynthesys प्रेजेंट्स द ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग। कल मैंने जाने से पहले कहा था, देखिए मैंने नहीं कहा था ये बात, मुझे एक कॉल आया था एंड मुझे बताया गया था कि मेरे को होस्ट भी आने वाले स्टेज पे, तो मैं काफ़ी खुश हुआ था कि यार चलो वापस से काम करने का मौका मिलेगा साथ में। तो वो तैयार हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप लोग जो देखते हैं कि हाँ स्टेज पे मैं आता हूँ, एनालिस्ट बैठे रहते हैं एनालिस्ट डेस्क पे, कास्टर्स रहते हैं, प्लेयर्स आते हैं स्टेज पे, लेकिन सिर्फ हम नहीं है जो इस टूर्नामेंट को इस कगार पे लेके आए हैं, इस सक्सेसफुल बनाए हैं, हम इस स्टेज तक पहुँचाए हैं। हमारे साथ ज़रूर बैक एंड टीम रहती है जो बहुत मेहनत करती है। हमारे जाने के बाद 5-6 घंटे मेहनत करके आप जो देखते हैं जियो सिनेमा पे वो आउटपुट दिखाते हैं। तो एक बार ज़रूर हम चलेंगे बैक एंड टीम पीसीआर टीम के ऊपर नज़र डालने के लिए कि क्या पीछे एग्जैक्टली होता है जो आप लोगों को शायद शो पे देखने का मौका ना मिले। कैप्टन, आपने बहुत सही बोला। बैक एंड में बहुत सारी चीज़ रहते हैं जो कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं, पूरा शो दिख जाता है। अभी हमने देखा हमारे कैमरा रूम, कंट्रोल रूम, साथ ही में साउंड रूम, एंड अब हम देख रहे हैं हमारा पूरा पीसीआर रूम, एडिटर्स टेबल से लेके लीग ऑप्स टेबल लेके एंड प्रोड्यूसर्स, ये सारे जाके मिल के बनते हैं हमारे एक प्रोडक्शन कंट्रोल रूम, जिन्होंने ये पूरा शो अभी तक आई थिंक इतनी बेहतरीन तरीके से चलाया। एंड वी वांट टू सी अ लॉट मोर एक्शन एज वी आर हेडिंग इनटू द लास्ट 3 days of GEPL. Hey man, thank you for your kind words, but what are you doing? शो डिले हो रहा है भाई, जल्दी जा बैक स्टेज।
प्राइस रुका हुआ है तेरे लिए, जल्दी। आवाज सुना सुना लग रहा होगा। आप सबसे मिला भी हूं मैं, साथ में बात भी किया है, डेस्क पे भी था, बट अब मौका एंड टाइम आ चुका है, क्योंकि ये आखिरी 3 दिन मुझसे भी इंतजार नहीं हो रहा है, एंड वी विल बी सीइंग ऑल ऑफ यू टुगेदर, एंड मे बी यहाँ पे स्टेज पे तैयार हूं आपके लिए। Well, ladies and gentlemen, please put your hands together for Lucifer, your co-host and mine for the remaining part of the tournament. Welcome. Nice to be back again, I guess. Yes, man. I think वहाँ से एक अलग नजरिया था जो मैं आप लोगों को देख रहा था, बट यहाँ पे आके इन लोगों के साथ, इन सब के साथ मैं पहले से हूँ, एंड अब यहाँ पे स्टेज पे आके मुझे और खुशी हो रहा है। I don't know. I think this excitement की last 3 days से ये हजम नहीं हो रहा है कैप्टन, बट इट इज व्हाट इट इज, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कंपटीशन। I mean, last 3 days है and सिर्फ टॉप 4 टीम्स आगे जाएंगी, right? And that is what makes it way all the way more interesting. यहाँ पर it has to be all in. आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मैंने डे 1 पे बोला, मेरा जो डे 1 था, मैंने तब बोला था कि देखिए अभी गेम ऐसा हो गया है कि आप जितनी गलतियां कम करेंगे, जीतने के चांसेस आपके उतने ज्यादा रहेंगे। बट देखिए, अब बातचीत खत्म करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि जिसके लिए आए लास्ट 3 डेज, उस वक्त से हम बोल रहे हैं। I welcome everybody to JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League, सबसे बड़ा प्रीमियर लीग। एंड अब मौका आ चुका है कैप्टन, इस लास्ट 3 डेज में जो हमारे 8 टीम है उनमें से टॉप 4 कौन जाने वाला है, बट उससे पहले हम बात करेंगे हमारे स्पॉन्सर जिनके बिना ये टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं हो सकता था। आवर टाइटल स्पॉन्सर्स JetSynthesys, ऑफिशियल पार्टनर्स लेंसकार्ट, पल्सर NS 125, फिनोलेक्स पाइप्स, फ्लीट गार्ड फिल्ट्रम, ध्रुव ग्लोबल स्कूल। उन्हीं के साथ साथ फ्लिपकार्ट, AMD, गीगाबाइट, LG अल्ट्रा केयर एंड ज़ेब्रॉनिक्स भी हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स रहने वाले हैं। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स का esports रियल क्रिकेट 24, जिस पे ये पूरा टूर्नामेंट बेस्ड है, एंड ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्पोर्ट्स 18 एंड हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा। वेल, ये टूर्नामेंट इट इज द परफेक्ट मिक्स ऑफ ई-क्रिकेट, ई-स्पोर्ट्स, गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट। इट इज द बिगेस्ट, इसलिए हमने बोला दुनिया के सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स क्रिकेट प्रीमियर लीग, एंड इसको देखने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। बट इसी के साथ मैं दर्शक को जरूर बताना चाहूंगा कि आगे आने वाले दिन में वो क्या एक्सपेक्ट करने वाला है। हमने बता दिया ऑलरेडी, लास्ट 3 डेज ऑफ एक्शन है, बट इसके बाद फिनाले सबसे बड़ा स्टेज पे होने वाला है, जहां पे आप उस एक्शन को देख सकते हो, जहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एब्सोल्युटली, आप जरूर जुड़ सकते हैं। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सा एक जगह है, जगह का रिवील हम धीरे धीरे जैसे दिन में प्रोसीड करेंगे, हम रिवील करते जाएंगे आप लोगों के सामने, क्योंकि सिर्फ 3 दिन बचा है, एंड फिर 8 तारीख को हम इस इवेंट का फिनाले देखेंगे। एक बेस्ट ऑफ 1 का मुकाबला, सब कुछ डिपेंड करेगा उसी पे, क्योंकि हम वही फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं जो कि एक्चुअल क्रिकेट में फॉलो किया जाता है। सो इट्स गोना बी क्रेजी, बट टू गेट द शो स्टार्टेड, देखिए हमने सारी बातचीत तो नहीं करने वाले, राइट? हम जाके हमारे एनालिस्ट को जरूर थ्रो करेंगे, बट कीप इन माइंड गाइस, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, बिकॉज यहां से टीम्स बाहर जरूर होंगी। देयर विल बी एटलीस्ट 1 टीम जो आज खेलने के बाद दे विल हैव नो चांस टू गो फॉरवर्ड इन द कंपटीशन। देखिए, आपने जैसे बताया, सिडनी पैंथर्स एज वेल एज चेन्नई वुल्व्स, ये दोनों टीम कहीं ना कहीं थोड़ा असमंजस में है, बिकॉज व्हाट हैपेंड येस्टरडे वाज जस्ट अनबिलीवेबल। बट आज का जो दिन है ना, इतना जो पूरा टेंशन का माहौल बना था, उसको थोड़ा रिलैक्स करते हैं कैप्टन, थोड़ा मजाक करते हैं, क्योंकि आई थिंक दिस इज द ओनली डे वेयर वी कैन हैव अ लॉट ऑफ फन, बिकॉज इसके बाद तो पता है बैक टू डेज। तो आज के दिन है ना, इस पूरे माहौल को आराम से हम लेके जाएंगे। आपको भी जब स्टेज पे आएंगे, हंसी मजाक के साथ ही खेला जाएगा, एंड हम देखेंगे आपके साथ भी क्या कर सकते हैं। बिकॉज मैंने प्लेयर से भी बातचीत किया था कैप्टन, अरे यार मिस हो गया, पता नहीं क्या हो गया स्टेज पे, हाथ कांप रहे थे। तो आज वो सब हटा देंगे, ये हमारा पक्का प्रॉमिस है। राइट, एकदम। हम बहुत सारे गेम सोच के आए हैं जो हम बचपन में खेला करते थे। सांप सीढ़ी नहीं खेलने वाले बैठ के, बिल्कुल नहीं डरिएगा। बट बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो कि 2 मैन 3 मैन हम खेलते थे। कोई रेड हैंड्स खेलना चाहे मेरे साथ तो जरूर खेल सकता है। नहीं यार, आई वाज अ चैंप। किसके लिए रेड हैंड्स चाहिए? नहीं यार, उनको खेलना है, हाथ से ही खेलते, रेड हैंड्स के लिए क्या? राइट, सो विल नॉट ब्रेक एनीवन्स हैंड टुडे, एटलीस्ट मैं तो नहीं तोड़ूंगा, अंगूठी पहना हूं। बट विदाउट एनी फर्दर अड्यू, आई थिंक इट्स टाइम वी थ्रो इट बैक टू द एनालिस्ट फॉर द फर्स्ट गेम एंड ऑफ कोर्स द शो ओपनर, क्योंकि आज का दिन important है। There's a lot of points that the analyst will be speaking in front of you. So analyst, please take it away.
Hello, welcome, namaste to JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League. We are on day 9 on Geo Cinema, of course, and day 8 has given us some individual brilliant performances, courtesy that 5 innings from the likes of Bishwas, who turned the tables and turned the fortunes of the Delhi Sharks in this contest. Remember, we have reached that business end of the season, and now the race is to qualify for that top 4. And talking about top 4 qualifications, it is the Dubai Vipers who have reached and sitting pretty on top of that table, and they are ready to take on the New York Apes. Joining me along is my expert Chetan Arora. Chetan, the race is now on. Absolutely, Roshan. Thanks for the introduction. The race is absolutely on. Just 3 days remaining in the round robin league stage. और उसके बाद हमें अपना top 4 मिल जाएगा, जो top 4 knockouts खेलेंगे for that trophy, that beautiful trophy, and the prize of 2.51 crores. I can't be more excited. And as you mentioned, yes, Dubai sitting on top of the table, Kolkata right there, and both of them are playing 2 matches today. Chennai also in action. A lot of ups and downs in store for us. A lot of ups and downs, of course. This one expected to be a cracker of a day, and this is how we started, remember. While we talk about the business end coming into that last 3 days, it started with the registration of a lax, like we keep reminding y'all, eventually the qualifiers on Challenger mode, where we picked the country's finest talent to go to that draft and workshop, eventually, which made us come to this league stage out here. And now, in a couple of days, ladies and gentlemen, we are heading to that land finale on 8th December. Absolutely. लाखों की तादाद में हमारे पास रियल क्रिकेट के खिलाड़ी आए थे क्वालिफायर्स में, और उसमें से चुन के बेहतरीन 48 players, the top 48 players have been distributed in our 8 teams. और ये 8 teams कौन सी हैं? दुबई वाइपर्स, दिल्ली शार्क्स, लंदन राइनोज, चेन्नई वुल्व्स, न्यूयॉर्क एप्स, मुंबई ग्रिजलीज, कोलकाता हॉक्स एंड सिडनी पैंथर्स. बहुत घमासान युद्ध चल रहा है उस टॉप 4 के लिए, और वो आज 9वें दिन भी जारी रहेगा. जरूर जारी रहेगा. हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल की तरफ नजर डालकर, क्योंकि दिस इज वेयर द रेस नाउ स्टार्ट्स हीटिंग अप. रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट दीस टॉप 4 राइट नाउ, बट मुंबई ग्रिजलीज एंड न्यूयॉर्क एप्स, दे आर नॉट फार ऑफ, एंड दिस इज द डे ऑफ कोर्स फॉर देम टू कम आउट फायरिंग इन ऑर्डर टू सीमेंट दैट पोजीशन इन दैट टॉप 4. चेतन, Oh, absolutely. Now let's do a little bit of mathematics here. और बहुत ध्यान से सुने, सारी टीमें भी सुने और हमारे सारे दर्शक भी सुने. आज दुबई और कोलकाता हमारी टॉप 2 टीम्स हैं. They have 4 games remaining. तो उसमें से they will play their 2 games today. अगर वो दोनों टीमें वो दोनों मैच जीत जाती हैं, they will be on 18 points, which will mean automatic qualification to the top 4, and they will finish as the top 2 teams. Order हमें बाद में पता चलेगा, but they will finish as the top 2 teams. If they win 1 game each, they will finish on 16 points, and that will also earn them qualification for the top 4. तो आज इन दोनों टीमों पे हमारी नजर रहेगी इन दोनों मैचेस में, और ये दोनों टीमें पहला मुकाबला खेल रही हैं, पहला और दूसरा मुकाबला खेल रही हैं. और उसके बाद जो नजर आएगी हमारी चेन्नई वुल्व्स पर. चेन्नई वुल्व्स को आज का मुकाबला जो मुंबई के अगेंस्ट है वो जीतना बहुत जरूरी है. If both Dubai and Kolkata win today, both their matches, Chennai loses today, they will be eliminated. Chennai needs Dubai और Kolkata to lose 1 game ताकि वो आज का मैच जीतकर टूर्नामेंट में रहें. लेकिन अगर आज कोलकाता या दुबई दोनों में से कोई भी टीम अपने दोनों मुकाबले हार जाती है और चेन्नई अपना आज मुकाबला हार जाती है, चेन्नई फिर भी एलिमिनेट नहीं होगी. Nobody wants to lose, Roshan, of course, but this is pure mathematics. Thanks for that explanation, Chetan. This is pure math, but I'll tell you what is more important than that math. Those players going out there and giving their 100%, Absolutely. because it's going to be a characteristic, of course, of the teams when you look at that. And just one point about Mumbai Grizzlies, their form has been really poor. They have slipped out of the top 4. और आज उनका मुकाबला चेन्नई के साथ है. That third match is going to be real intense. The third match, of course, like we promised you, we're bringing you all the entertainment of e-cricket and everything that you can possibly think of. It is here at the GEPL. And then, of course, these are the games for you all today. Dubai versus New York. That is the first one that we have on the cards, followed by Kolkata and London. Mumbai and Chennai will be a very crucial clash because this is what will decide eventually Chennai's fate for today. Yeah. They will have to win this one. Dubai taking on I mean, I don't even want to say about Delhi because they have been in prolific form. Yeah. You can't stop that juggernaut. And in the end, Kolkata take on Sydney
crucial matches all around, like London, New York, Sydney. I mean, top two or last team or Mumbai, in सब को छोड़ दें तो ये टीमें भी, they are also competing for the top 4 and they are all on top 10 points. So Dubai, Sydney, New York, London, in पे भी नजर रहेगी. But imagine Dubai and Kolkata winning their first matches. Imagine the pressure on Chennai. And then, of course, we have been doing a talent predictions for you all. I'm pretty sure even you do it sitting back in your homes watching this show on Geo Cinema. And that's how it looks like for now. Match 1, I think 4 of us have chosen to go with Dubai. Lucifer, I think we'll have to wait and watch if that turns out right. I'm just looking at the Chennai team. They're smiling seeing the prediction. None of us have picked Chennai for victory today. We're still cheering for you on the sidelines. But if you're a Chennai fan, of course, I'm pretty sure you would be behind your back against that team. This is the game right in front of you all. Dubai Vipers, I'll tell you about their form. They come back with back-to-back victories. Mumbai, Sydney, twice in fact. Chennai, there is no team that they have not vanquished. Yeah. Last 6 matches में Dubai have won 4 games. और जहां हम New York Apes की बात करें, they are at number 6. They've only won 3 games out of their last 6. They're on 10 points. ज़्यादा distance नहीं है. 4 point का distance है. They still need to catch up. और अगर आपको top 4 में जगह बनानी है, तो आपको top 2 sides को हराना होगा. And this is a crunch match for New York Apes as well. We'll have a look at the rosters, of course. Dubai Vipers then is that team which will be raring to go right in front of you all. You talk about the likes of Mukesh and Manish who have anchored and given their team, or rather taken their team to this position. I'm not going to talk about Mukesh and Manish today. I'm going to talk about the other players. Roy, इनके फॉर्म के बारे में हमने बात की है, but he's bucked up in the last 2 matches, और अब ये 100 रन से केवल 1 रन दूर है. और इनका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 के पास पहुंच चुका है. और अगर हम बात करें हरभजन और विजय की, इन्होंने 6-6 विकेट लिए हैं लास्ट के 3 मैचेस में. Their bowling is giving the impetus that this team needs. They are supporting Manish and Mukesh. This team is on a roll. This team certainly is on roll, but they have to be careful. Remember, in that last game, Mumbai almost got them to the brink till that last over. Needed 1 of 1. Eventually, Dubai Vipers getting it there. On the other side, the New York Apes, well, have had a mix and match in this contest, but then Kamal, JD. Yeah, I mean, Kamal and JD have been in top-notch form. Razin is providing them support. Netaji with that hat-trick. What I'm trying to say here is that Jeetu and Jeetu need to step up. पिछले मुकाबले में जो New York ने जीता, इन दोनों ने अच्छा performance दिया. As long as they are performing, the other 4 are getting that support, and that is crucial for New York Apes. And it'll be crucial for all these players to come out in full glory, because this is the stage where it matters the most right now. The players to watch out for, again, Kamal, without a doubt, for his 189. Manish, on the other end, has well crossed 200 then. Yeah, absolutely. And you know what? Where Manish takes advantage is, runs में आप देखिए 20-22 run का difference है. 4s and 6s, Kamal is like, a brute player. Strike rate is high, so he's obviously going to hit a lot of 4s and 6s. He bats in the power play. Manish sometimes comes up, sometimes goes down, depending on the opposition, depending upon the situation. But where Manish wins out is his contribution with the ball. 11 विकेटें ली हैं इन्होंने. तो यहाँ पे एक तरफ है ऑलराउंड परफॉर्मेंस और एक तरफ है हमारे ब्रूट प्लेयर. और हम अपने व्यूअर्स को बता दें, हर टीम में ब्रूट प्लेयर्स हैं, रैडिकल प्लेयर्स हैं, बैलेंस प्लेयर्स हैं और डिफेंसिव प्लेयर हैं. 6 प्लेयर हैं. जो ब्रूट और रैडिकल हैं, दे कैन पुश अग्रेसिवली. उनका पावर इज रियली गुड, उनका टाइमिंग इज रियली गुड. मार्जिन ऑफ एरर is a little lower. जो balanced जो defensive players हैं, maybe down on power, but equally good on timing, and the margin of error is a little higher. मैं कहना जरूर चाहूँगा कि इस मैचेस अब से यहाँ से margin of error शून्य रहे तो ही better है, because now it is a very important stage for all these teams in that bid to make it to the top 4. For now, of course, remember, it is the Dubai who won last time against New York Apes when they came back. This is a chance for New York Apes to really do the talking when it comes to performance. We're all ready for the toss then. Let's go down to a host who's ready with the umpire and the captains. Thank you so much, Roshan and Chetan. But let's not forget, guys, कि आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है ये कुछ टीम्स के लिए. नॉट सिर्फ कुछ टीम्स के लिए, आई थिंक सबके लिए इक्वल इंपॉर्टेंट है. जहां पर दुबई वाइपर्स वो टॉप में रहने के लिए एकदम जी जान लगाने वाले, वहीं पे चेन्नई अपना सर्वाइवल के लिए वो भी जी जान लगाएंगे. लेट्स नॉट फॉरगेट दैट दिस इज द लार्जेस्ट ई क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट बेस्ड लीग ऑन रियल क्रिकेट 24. और उसी के साथ दिस इज अ परफेक्ट पैकेज ऑफ ई स्पोर्ट्स, गेमिंग, ई क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट के लिए मैंने तो बहुत कुछ सोचा है, बट विदाउट एनी फर्दर अड्यू मैं पहले मैच के पार्टिसिपेंट्स को
टीम्स को बुलाना चाहूंगा स्टेज पे. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर गेम नंबर 1 पार्टिसिपेंट्स. एंड ऑफ कोर्स अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू गाइस, आज मजे करने आए हैं हम. ये मजे चलेंगे पूरा दिन, लेकिन जब मैच चालू होगा देखेंगे सीरियसनेस कितना है एंड कितने ऑफ कोर्स मजे रहने वाले. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स जस्ट कॉल अप बोथ द टीम्स ऑन स्टेज, न्यूयॉर्क एप्स एंड दुबई वाइपर्स. Sunday in the competition we came from the bottom and we winning. There ain't no competition. कोई नहीं मुकाबला. From the bottom निकला टॉप, डाला पैसा तो मुनाफा, माँ पे गाली सीधा लाफा. रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं. 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे. स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स, पूरा कामयाब मैं. कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं. हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में. हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में. हा 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 हा. भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता. खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा. पूरा गैंग ग्राइमी हा. टॉप 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 सीधा शॉट शॉट्स तेरे ब्रेन में. बॉम्बे दा बैड मुंडा. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Piyush, here I was just on Lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण, रुपीज है. I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? करण, ये बढ़िया प्राइस है. It's only because we don't have middlemen. 90,000? आप कहीं और से ले लो. 80,000. I'm going. Bye. अमीरों की हाई लगेगी तुझे. फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन. लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. देखिए, अंपायर रोज आते हैं हमारे साथ साथ टॉस करने के लिए, तो अंपायर के बारे में मुझे कुछ खुफिया जानकारी पता लगी है आज. तो पहले कैप्टन्स को बुला लेते हैं, फिर अंपायर के लिए तो जो जानकारी मैं लेके आया हूँ उसके बारे में भी बातचीत करेंगे, क्योंकि हाँ आज मज़े का दिन है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं हम. मैं तो करने वाला हूँ, ठीक है. सो दोनों कैप्टन्स प्लीज आ जाओ आप. जेडी कैप्टन ऑफ न्यूयॉर्क एप्स एंड मुकेश रोडवानी कैप्टन ऑफ दुबई वाइपर्स. यार जोरदार तालियां हो जाए यार. कम ऑन यार, सबको चीयर अप करना आप लोगों का, ऑडियंस का काम है. सो कीप क्लैपिंग. दोनों प्लेयर्स, दोनों कैप्टन्स आ चुके हैं हमारे साथ एंड अभी टाइम आ गया है हमारे अंपायर, स्वैग अंपायर, क्लासी अंपायर को बुलाने का. द अंपायर कूल नागमोटी आदित्य, प्लीज कम अप ऑन स्टेज. ग्लासेस नहीं लाया अंपायर आज. वेल, आज इनका नाम आदित्य है, राइट. इनका आज बर्थडे है, तो जो भी है यहाँ पे सब हम लोग इनके लिए गाएंगे, ठीक है. बाकी पार्टी ये रात को देंगे, वो अलग से होगा, लेकिन सब इनको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे. इनका नाम आदित्य है. मैं दोबारा फॉर क्लैरिफिकेशन बोल देता हूँ. ऑन माय काउंट गाइस, 3, 2, 1. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आदित्य, हैप्पी बर्थडे टू यू. सर थैंक यू इतनी बढ़िया अंपायरिंग के लिए, इतनी बढ़िया टॉसेस के लिए. बट अभी टॉस कर लेंगे हम डायरेक्टली. कौन करेगा कॉल? You're calling, JD? All right, न्यूयॉर्क का टॉस कॉल. Heads. The call is heads and it is heads. JD starting off, क्या चूज करेंगे आप बताओ? बोल. Bowling first. तो JD जाने से पहले आप ये मुझे बताओ कि आपका परफॉर्मेंस हमने देखा है, like it's been a landscape completely. हम देख रहे हैं एक बार ऊपर जा रहा है, एक बार एकदम आप शट डाउन हो जा रहे हो. आज के लिए कुछ अलग से आपने प्रिपेयर किया है कि नहीं? प्लान तो अभी भी सिंपल ही है, बस नॉर्मल क्रिकेट खेलना चाहेंगे, बाकी देखते हैं. और परफॉर्मेंस के बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यू फॉर्मेट है तो थोड़ा समझने में टाइम लगा है जी. बाकी प्लेयर अच्छे हैं, उस पर कोई किसी को डाउट है नहीं हमारी टीम पे. कभी कभी होता है. आप बचपन में क्रिकेट खेलते थे पहले? हाँ बिल्कुल, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ. भाई बहुत टैलेंटेड लोग आ रखे हैं यहाँ पे. भाई मैंने बस गली क्रिकेट खेला है, ठीक है. वो एक लगा दो बल्ला, ठीक है, मतलब हम बल्ले को ही विकेट बना लेते थे, ठीक है. बल्ला लगा दिया, उस पर खेलेंगे. तो कब से आप क्रिकेट खेल रहे हैं वैसे, लाइक ऑन फील्ड? ऑन फील्ड 2000 के समथिंग से. मतलब दैट्स लाइक भाई बहुत 6-7 साल. हाँ, 6 साल का था. 6 साल की उम्र से ये क्रिकेट खेल रहा है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार जेडी के लिए, क्योंकि जेडी ना सिर्फ यहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट पे, बट ऑन फील्ड भी इन्होंने खेला है बहुत सा. 6 साल की उम्र से, मतलब ऑलमोस्ट आप 25 साल से खेल रहे हैं बेसिकली. 22 से 25 साल हो गया खेलते हुए आप. 22. देखो ऑल द बेस्ट, मैं बस यही बोल सकता हूँ. बट एक बार आपके ओपोनेंट से हम जरूर बात करेंगे. उन्होंने बॉलिंग चूज किया है मुकेश, एंड आपकी टीम तो एकदम फॉर्म में जा रही है,
राइट आप बोल रहे थे मुझे कि आप चिल करके खेलते हो, प्रेशर नहीं बनाते हो ओपोनेंट पे, बट क्या ये बात सच है? सी लास्ट डे टूर्नामेंट, लास्ट फ्यू डेज बचे हैं टूर्नामेंट्स के, प्रेशर हर एक टीम में, कोई कितना ही बोले, प्रेशर हर टीम में क्वालिफिकेशंस। जी। अब जो प्रेशर हैंडल कर लिया वो आगे निकल जाएगा। बट प्रेशर हैंडल करने के लिए आपका कोई मंत्र ऐसा वगैरह कुछ है? जितना ज़्यादा काम रहे वो बेटर है वो। जितना ज़्यादा काम रहे। तो आप लोग हंसी मजाक करते हो मैच के दौरान या फिर एकदम सीरियस? काम प्रेशर है, सब हंसी मजाक चलता है। हंसी मजाक चलता है, चलो बढ़िया। वेल प्लीज शेक हैंड्स जेंटलमैन बिफोर द मैच। बॉलिंग, उसके बाद चेस करनी है, उसके बाद इनको रोकना है, बहुत सारी चीज़ें होंगी गाइस, हमें पक्का पता है। लेकिन उससे पहले लेट्स जस्ट हेड ओवर टू द एनालिस्ट फॉर द प्री-मैच सेगमेंट। एनालिस्ट प्लीज टेक इट अवे। Well, then, of course, the news from the center is that the New York Apes have won the toss and have chosen to bowl. Again, textbook style decisions. They want to go safe. They're not really wanting to take those high risks today. But Dubai Vipers, I tell you what, have been one team, irrespective of the toss, they've given 100% out there. 9th day of action. I'm not surprised that the first match we are seeing is you win the toss, bowl first. और आज इतना important day है सारी teams के लिए. I think we are going to see the same thing. I don't see any changes in strategy. Let's see how this match pans out. Let's absolutely see. Getting excited for that first game of day 9. But for now, our casters are ready. Let's go. Game on. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों और हमारे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग में। हम दिन के पहले मैच के साथ आ चुके हैं जो खेला जाएगा न्यूयॉर्क एप्स और दुबई वाइपर्स के बीच में। मैं हूं फ्लोकी, मेरे साथ है क्रिप्स। Crips, Dubai Vipers are at the tippy top of the table, going up against the Apes, who are somewhere in the lower bottom half of the pack. Now, of course, the Apes were a team that people were expecting great things from after some of their initial performances, but that has not been the case so far. Do you think they have what it takes to match up against the Vipers? I think they definitely have what it takes to match up against Vipers. Plus, I think Vipers don't need to play all that aggressively now. They can just lay back. वो अभी table के top पे आ चुके हैं, तो they have a lot of freedom right now. You know, even if they lose, उनका qualification guaranteed है. But obviously, there's something called as bragging rights. So the Dubai Vipers would love to stay on top. But the reason I think that the New York Apes can actually go up against them is because both these teams have something that they do really, really well in particular. All right. So for the New York Apes, they have the highest number of boundaries in this entire season. Wow. This team. Okay. But the Dubai Vipers, they have the highest number of wickets in this entire season. So it's like an immovable object facing an unstoppable force, and they're about to collide with each other. And when this happens, बहुत मजा आएगा, ladies and gentlemen. Let's begin this one. Yeah, we're going to go straight into the game as seems like there already has been a couple of balls here. 2 fours have been found here by Ankit Roy. Things starting off rather strong here for the Vipers, but just as we tune in, well, there it is. The first wicket is found and Roy the Brute has been taken out of the picture. The Dubai Vipers looked like they were off to a flying start, but the New York Apes quickly put a halt to their momentum. Yeah, basically cutting off them at their knees, not even letting them hit the ground running. Razeen, great delivery so far. Sure, 2 boundaries concede किए, लेकिन at least उन्होंने एक बहुत ही important wicket निकाल लिया है. And now Harbhajan is here to bat. Yeah. Well, certainly hitting 10 runs in the first power play over is decent considering the number of balls, but they've still got a chance to probably get 15, but is this going to get caught? No! Oh, there was a missed opportunity here for the Apes. If they found that second wicket, that would have been amazing, but a misspeak coming to No way! Oh, no, what on earth have we just witnessed?
Oh no, the Apes! They did not get their banana today. We were starting to praise Razeen a little too soon, man. This should have been a wicket, but it ended up being a free boundary. Oh, is this gonna be a catch? No, it is not, but still the boundary is protected, so no 4 found. Although, I don't think the New York Apes are going to be feeling satisfied because, well, this over could have been a whole lot better had it not been for 2 silly goof-ups by them. So, yeah, I mean, you get a wicket, but then you give away 6 runs, and then you give away another 3. Exactly, right? So it's like they run 2, and then the bowler throws it all the way to the boundary. So that's an extra 4. That's how you get 6 runs in one bowl. On a ball that was supposed to be a wicket. So, yeah, a major lifeline. Oh, that is a quick run, but no, I believe that's an out. And there it is. I think the green is punished as the umpire granted, though. That's the question. Well, it seems like he has granted it. The drums are banging. And there it is. Mukesh has already gotten up the captain. Taken out of the picture here. And now it is Mr. Consistent's job to step onto the pitch. I don't know and start delivering for the Vipers. I think Manish should be stepping in if they're going to change, if they're going to keep the batting order the same. I don't know how can anyone be ever so consistent in this game. This game has been so topsy-turvy. It's been a roller coaster ride all the way through. You think there would be a wicket, turns into a boundary because of an overthrow. You think they'll be able to make it across and run for at least 1, but no, the wicketkeeper grabs it and instantly strikes the stumps, resulting in another wicket for Jitu. Yep. The Apes finally finding their footing here. Some good bowling coming out from the last couple of balls, meaning that they actually have some breathing room now. And the Dubai Vipers, I mean, they have to slow down the tempo. Even though this is the power play overs, even though this is the opportunity for them to score those boundaries, you really have to conserve those wickets. You don't want to lose 3 before 2 overs are done with. So, have I spoken too soon? No, I have not. Okay, the ball does find that bounce. And well, the Apes, they continue to pile on the pressure. Giving away 2s and 1s now. There's 2 balls remaining in this over before the power play ends. Yeah, and I would have said that 19 runs in the first power play over is amazing, but then you only score 3 more. That definitely seems underwhelming. Maybe I spoke a little too soon. They took that personally. They certainly did, smashing that across the boundary, straight towards the mid-wicket. And that's going to be a 6 here for the Dubai Vipers. Well, right, as we start to count them out, they show us what they're made of. In fact, not even towards the mid-wicket, it was a cover drive. Okay, time for the 1. They're golden. But that marks the end of the power play overs. 29 runs found. And both sides, I mean, they have a little something to work with. You know, Dubai Vipers with 29 runs, not all that bad, but the New York Apes also finding 2 crucial wickets. So I would say that both the teams are just struggling a little bit. None of them performing to the level that we are used to seeing them at. You know, there have been some goof-ups by the New York Apes. There have been some missed opportunity by the Dubai Vipers. But overall, all things considered, we are back to square 1. Ooh, good bowling. The only difference being the overlying story of Dubai being at the top of the table and New York Apes still trying to climb back into the top 4 and hopefully qualify. Oh, yeah. Jitu, this time aiming the stumps. But good connection by Harbhajan. As time ticks by, the Dubai Vipers will look to pile up those 2s and 3s. Build it up on the back of the power play overs. And hope to touch 60, maybe even 70 if they're feeling it. Straight ball, no spin, no swing, nothing. Just straight for the stump and short ball tha, to agar ye miss hota to bhi risk nahi tha, it wouldn't have hit the stumps. And that's why Harbhajan also playing it nice and safely. Yeah. Strokes it towards cover side. And Jitu has been doing a stellar job so far, just making sure that the Vipers don't find any opportunity to score a boundary. He is the fast medium bowler for the team. And yeah, again, a bit of a change-up coming here from the side of the Apes, not sending in their fast pacer right away as the power play over ends. Instead, I think they're saving him for the next one. So we'll see if they decide to bring out that weapon. It's Netaji who's the fast bowler for the team. I am actually surprised that they are letting Harbhajan play on strike so much, considering he's the balanced batsman. He's just hitting those 1s and 2s
And even then, he's got a strike rate of 240 something. Yeah. So I think it's still fine that they've got Harbhajan out there, but eventually they need to get their radicals and their. Oh, is that going to be caught? Yes, it is. Oh, it chipped the bat. Went towards the third man, and the batsman was caught off guard. And another wicket coming through here for the Apes, right in the nick of time. This is some bowling that you'd see the Dubai Vipers do a couple of days ago. Finding a wicket in every over, but this time around it's the Apes. Exactly right. We're used to seeing the Dubai Vipers take these kind of wickets, that too in such quick succession. It seems like both the teams are cosplaying each other. A little role reversal over here, perhaps. Yeah. Well, the Apes, I mean, had a peek into the Vipers strat book and they liked what they saw, so now it's them. You know how imitating their side. And exactly. You know how it's like, hey, you can copy my homework, but just change it up a little bit. Yeah. So it doesn't seem plagiarized. Uh-huh. That's what the Apes are doing? Yeah, perhaps. How do you think the Apes turned into humans and survived all this time? Historically, you know? You see one guy growing food, you go after it. See another guy hunting, go after it. Repetition. There it is. Today's class was in evolution, folks. It seems to be becoming a consistent trend for the two of us, you know? Certainly. Now, I wish there was some I consistency mean, you come in these here, teams. you want to watch some e-cricket, and you also end up getting, you know, a free evolution lesson. Someday it's biology, the other day it was philosophy. Someday it's also going to be psychology. Exactly. I mean, you know, there's something for everyone here in GPL. I mean, it makes sense, right? We have players from all walks of life. Makes sense that you have casters also who have colorful experiences, to say the least. Certainly. Well, the Dubai Vipers, so far their experience has not been all that colorful, just finding twos. So yeah, just building up on the back of those power play overs, and if they keep this up, they're still looking at a solid 61 runs, which is not all that bad. Of course, a couple of boundaries would help the cause, but make all the twos while you can. And you can see Manish's priority right now is just to defend the wicket, to get those twos, and not really try and hit too hard. Vamsi is on the field. He is the radical batsman that you were talking about. He is the one that is remaining. That's who I was waiting for. And yeah, if my intuition serves me right, I think Manish is going to continue to go for twos and try and get Vamsi on strike here for the next over, and he will succeed. So last over, you have the radical batsman on strike, something that you needed. 49 for 3 is a decent enough score at the end of the fourth over, but we have seen New York make 73 runs in the past. So I think anything below 60 will be dangerous territory for the Dubai Vipers. Yeah. That is 6 balls remaining. Wow. Oh, that is smashed across, but it might be caught by the fielder. Yes, it is. Vamsi on his very first ball taken right off the pitch. The New York Apes were having none of that. Off with the batsmen, they say. Off with the radicals. You want those balls, you better work for him, big boy. They see the radical batsman and they reduce him down to ashes, turning him into a redundant batsman. Yeah, from radical to redundant to, well, injured possibly, but it's e-cricket, so none of that. And already, I mean, a very good over here for JD. Getting a wicket, followed up by a dot ball. In fact, at this rate, getting to 60 might be troublesome. Oh, is that going to be the final wicket? No, it is not. Oh, close. Oh, the Vipers, I mean, yeah, they had to feel that that one was a bit too close for comfort. Now, you are lucky that there's not a single player inside the circle of the 30 yards towards point side. If there was, that probably would have been a catch. Yeah. And, well, Manish, he realized what happened on that last ball, so he will take it slow. And yeah, Manish, I mean, even though he's the balanced batsman, he's been one of the most consistent players here on the side of the Vipers. He always shows up, he always puts up a solid performance. And you can expect this man to really not drop the ball if you've made a good play in the course of the game. Right as I say that. Oh, instead of finding the middle of the bat, Manish found the edge, and the ball found the fielder towards the long offside, and that is going to be an out. Lovely wicket. Great fielding, getting those players in position
And you could see how that fielder just got down on both of his knees, slid into his other side, slid into the next innings to get that catch. So, at the end of the first innings, the Dubai Vipers are at 53 all out. They didn't even get to play their last ball. All new Pulsar Manias here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app now. लेकिन ये पाइप चलेगा। Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। So the New York Apes, they have their task cut out for them. And we've seen them cross the 70 barrier before. So this definitely has to be one of those games where Dubai Vipers bring out their high wicket side. Yeah. Keep in mind, guys, Dubai Vipers currently have the highest wickets in the entire league. So if there is any team that can defend a target of 53, it is them. Yeah, we've seen some really crazy defenses coming out here in the GEPL. We saw 41 runs being defended by the Delhi Sharks, which was... Yeah, it was definitely on the other side of the extremes. But the Dubai Vipers are known for their bowling. And well, did they even get a run? I did not notice. Got one run. Okay, they got one single run. They don't want to take risks. Probably on purpose, actually, because they want to try and get Kamal on strike. Makes sense, yeah. That is the brute batsman for the side of the New York Apes, in case you guys are wondering. So the brute batsman does have a ton of power behind his shots, has a bigger opportunity to smash that ball across the boundary, as that one did not find the stumps. It found something else. Something else that there's two of. But hey, at least the brute batsman, he didn't lose the things that make him a brute. Yeah, the bells are still on the wicket. And well, finally Kamal is going to be able to find a four. That's what they got him on striking end for, the New York Apes. Well, some signs of life for them here in the first over. And the Vipers, they need to limit the damage. They need to make sure that they don't get away with too much here in these first 2 overs. Otherwise, things could get hairy. And I do not mean that as a pun. That was unintended. We are getting away with way too much over here. Yeah, I certainly am. Are the Apes, though? Yes, they are. They're getting away with it 6. As the drums bang loud and true once again for them. Harbhajan tried to be a little bit cheeky, ball towards the off-stump line, but the length of the ball was not good, so it was struck really well. And oh, it's going to be another boundary coming through here for the New York Apes. They just cannot stop smashing the ball across, as that's going to be a 4, and there's still 1 ball remaining here in the power play. Harbhajan did not expect to get whopped like this. He's already given away 15. And it's not like he's trying the same ball again and again. No, variation कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो perfect variation नहीं मिला है जिससे कमल का विकेट निकल जाए. बिल्कुल. हरभजन आई थिंक काफी एग्रेसिवली खेलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें विकेट चाहिए था, और मतलब मैं समझता हूँ थॉट प्रोसेस को, यू नो, इफ यू फाइंड दैट विकेट, अगर आपको विकेट पहले जल्दी मिल गया तो आप काफी प्रेशर क्रिएट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेशर आप भी क्रिएट हो सकता है, लेकिन उसी के साथ some redemption here for the Vipers. They will take out the brute. Come on, off the pitch. Just the way Ankit was dispatched after his first 2 fours. Kamal, he finds an extra boundary, but in the end, that's all she wrote for him. 14 runs in his fate for the second innings, and now I believe JD might be stepping onto the pitch here. Tit for tat, जिस तरह से रॉय को आउट किया गया, उसी तरह यहाँ पे कमल को आउट किया गया. दोनों ही players just a little about 10 runs score करके out हुए हैं, that too within the first over. And this has become a very, very recurring trend whenever Dubai Vipers are playing. Yeah, I mean the Vipers, they've been looking strong so far, but it seems like they're starting to meet their match in the New York Apes. Although, with that said, there's still 4 overs remaining, still plenty of balls to go, and the Apes have a lot more room. That looks like it's going to be close, but nope, no cigar. The 2 found safely and soundly. You can see the run rate starting to drop. 9.7 runs required per over to try and close out this one.
Because again, the target was not the highest. You really can't hold that against the Vipers. They tried towards the end to smash that ball, but sometimes the price to be paid. In fact, I don't think the New York Apes even ran between the wickets. Had complete faith that that was going to reach the boundary. Yeah, as soon as it flew over the heads of the fielder on mid-wicket, they knew that he won't be able to race the ball towards the boundary. We've seen plenty of that in the past, and this seems like yet another ball which is going the distance. Another powerful pulsar NS125 boundary. Back-to-back fours. Oh, yeah. And the New York Apes really showing us why they're a team known for getting the most number of boundaries here in the tournament. This is exactly why. High risk, but also high reward. And they're negating the wicket-taking capabilities of the Dubai Vipers. So far, at least they are. Oh, my goodness. Oh, that's a powerful shot. I think that might have been the longest six you've seen here in this tournament. If it's not the longest, that is definitely the most effortless six. He did not even have to pull back on his bat. Look at that stroke. That's a wrist flick, redirect towards the mid-wicket. And he still makes it work. He's going for it again. Wow. That is going to be the fourth boundary here of this over. The Prabha just cannot catch a break. And the New York Apes, they're on a mission. Not to just win, but to really leave a mark and an impression on the Dubai Vipers that, hey, we also want to take it to the finals. Oh, and another one. Oh, my God, the New York Apes just cannot stop smashing the ball. Zara check karo ye Netaji khel rahe hai ki nahi. Netaji is known as one of the best bowlers in this entire tournament. Yeah, the balanced batsman is the one hitting it out of the park today. Exactly, he's a good bowler. Aaj aise shots batting mein kahan se maar rahe hai wo? I do not know, but I have to say the New York Apes turning over a new leaf here today in the GEPL. They were down on their luck for the last couple of days, but it seems to be changing today. The Vipers, I mean, sure they would have liked to win. If they found both the wins here today, they would have been in the complete clear for the finals. But yeah, looks like they're going to have to find another win somewhere else. Because the New York Apes, they're certainly not going to give away this one. Especially not after those power play overs. 39 runs pound trips. Absolutely ridiculous. Absolutely ridiculous indeed. The Delhi Sharks are playing Dubai Vipers later on today. And I'm pretty sure they will be feeling nervous if they're looking at this kind of game. Oh, yeah. Well, there's some optimism for the Sharks as well, because yesterday they put on a similar performance. And the New York Apes, they say, hey, we're going to take the bowling from the Vipers, we're going to take the batting from the Sharks, and we are going to be an amalgamation, a hideous sphinx of sorts. Exactly. An amalgamation of all the powerful forces. All the powerful animals, all the beasts. Make it the ultimate Megazord. Oh, yeah. Something straight out of the Rangers. Oh, yeah, Power Rangers. I mean, well, they certainly seem to have borrowed inspiration from some of that. Steep and landing. that again is going to cross the boundary for a six. They don't just want to win, they want to send a message. A strong message, written in bold, written in blood. It doesn't matter whether it's Netaji, it doesn't matter whether it's JD. They just keep on going for these boundaries. Oh my God, they just cannot be stopped. Looking to break their own record. They were the team who had the most boundaries, and they will continue to be the team that has the most boundaries. And I think at this point, they might just be the team that chases down the target the fastest. We are only 2.5 overs in, and the match is almost done. Oh my God, they are up on their feet. That is going to be the end of that. We did not even finish 3 overs. And the match is over. The New York Apes have taken it away. Stolen it right out of the park. And there is cause for celebration here for the Apes. The Vipers smiling sheepishly. They know that they've just been manhandled and that there's nothing they could have done about it. The Apes beat their chests and say we are the kings of the jungle for a reason. This was perhaps the fastest chase ever. Done in 2.4 overs. Now that is speed. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted.
Lenskart. Download the app. लेकिन ये पाइप चलेगा। Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। First innings, wickets just kept going. Something went wrong with the Vipers. But second innings, JD, your team, almost completed the match in power play. They almost completed it, right? Well, सबसे पहले captains को बुला लेते हैं, थोड़ा बातचीत करेंगे. And also JD के साथ, I want नेताजी up here. You come, bro. Yes, we need you up. मुकेश आप भी आ जाओ. Okay, you guys just hold on. But for now, मुकेश, क्या हो गया? ये कैसे हो गया? दुबई वाइपर्स डोमिनेट करने के लिए जानी जाती है. What went wrong today according to you? अपना दिन नहीं था बस आज. ऐसे तो नहीं कि हाँ मैंने कल बोल दिया था कि जो डोमिनेट करते हैं वो फाइनल में जाके चोक कर देते इसलिए. नहीं वो दिखेगा बाद में जरूर. अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं. बट आई डोंट थिंक ये आपको उतना ज्यादा मैटर कर रहा है राइट लॉस, क्योंकि आप ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल थे. मैटर तो हर मैच करता है. Okay. बट वी विल कम बैक. यू विल कम बैक. वेल ऑल द बेस्ट टू यू. बट नेताजी फर्स्ट, नेताजी आप आओ. जेडी मैं आपके पास आऊंगा जरूर. नेताजी यू टेल मी ब्रो, you are the only balanced batsman. You are the only team who opens up with a balanced batsman, right? You are the only one there. Yes, so why is it that they want to open up with you and not someone else, not someone brute? Basically, after back-to-back loss, see your fans are watching from right there, right? So you have to address it to your fans. After back-to-back loss, there was some more team discussions. Okay. So they make me promote to as a opening batter. So I play freely. After that, there are more hitters also in the G2, Razin, JD also. That's why I am playing freely and independently. So you are not just a bowler now. Now we know that what strong of a bowler you are. Along with that, you might be coming in as one of the best batsmen, if not the best, when we end the tournament, right? So how do you feel that you might get both the awards when we move on to the finals? It's very delightful only. It's very delightful. Whom do you want to, say that, yeah, this man has always been there. If I've played bad, if I've played good, this man is always there. He's behind me. He's helping me out. Who among your teammates? Whole players. All players. All players. That's great, man. Seriously, man. Hats off to you the way you have played. Congratulations on the victory. जेडी भाई आप आ जाओ अभी. अभी मुस्कुराना पड़ेगा. नहीं मुस्कुरा तो माइक नहीं दूंगा मैं. ये निकला ना मुस्कुराहट. पता यार कैसा लग रहा है? बहुत टाइम बाद ये जीत आया है. बहुत इंतजार करना पड़ा आपको. बट कैसा लग रहा है ओवरऑल? अच्छा ही लग रहा है. जीत किसको बुरी लगती है? ठीक है. तो उनके लिए आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मुकेश बहुत कल बोल रहा था कि हाँ हम तो चिल करके खेलेंगे, जीत जाएंगे. वैसे तो यहाँ पे सारे चिल करने के लिए आए हैं और गेम और जीतने के लिए भी तो सब ट्राई करते हैं. जी हाँ. बाकी मुकेश भाई की टीम ने जो परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट में, उसके लिए तो एक वर्ड भी मेरे पास नहीं है. मतलब कुछ बोल भी नहीं सकता. इतना अच्छा खेले हैं ये लोग पूरे टूर्नामेंट में. तो ये बताओ, एक खराब दिन किसी भी टीम का हो सकता है. तो ये बताओ, इनकी कोई साजिश तो नहीं है कि हाँ आज वाला मैच ऐसे खेल लेते हैं, कैजुअली थ्रो कर देते हैं, सब कुछ नहीं दिखाएंगे, कुछ बचा के रखेंगे स्ट्रेटजीज वगैरह? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. बस ये इनके लिए एक जस्ट बैड डे था और कुछ नहीं. इट्स जस्ट अ बैड डे. वेल दोनों ने आपने वही बोला. गाइस प्लीज शेक हैंड्स बिकॉज ये मैंने कहा है इंपॉर्टेंट दिन है. वेल वाइपर्स दे हैव ऑलरेडी मूव ऑन फॉरवर्ड. आप प्लीज बैठ जाए. वाइपर्स ऑलरेडी है ऊपर. अब कुछ भी हो वाइपर्स के लिए नीचे आना मुश्किल होगा. अभी ऊपर रहना तो वो रह जाएंगे, टॉप 4 में क्वालिफाई भी कर जाएंगे जहां तक स्टैटिस्टिकली अगर हम बात करें तो. लेकिन न्यूयॉर्क एप्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जीत है. अगले आने वाले मैचेस वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस. बट फॉर नाउ पोस्ट मैच जो भी हुआ है, डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स जो हम नहीं मिस करना चाहेंगे, हमारे एनालिस्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताएंगे वो. सो एनालिस्ट रोशन एंड चेतन प्लीज टेक इट अवे. Mania is here. Maniacs wanted. अब आगे कुछ भी हो सकता है. निकर और टी-शर्ट पहन के आया साइकिल, लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के. All flights to remain grounded. चारों गाड़ी जिद कर देगी. जो खुद की सुनते हैं दुनिया उनकी सुनती है. लेंसकार्ट आकड़ है. लेकिन ये पाइप चलेगा. Finolex pipes. पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. Well, if you are wondering that the surprise package at the GEPL might have turned off, but here it is, the first match of the day, day 9, the first surprise, New York Apes take a bow.
Absolutely. One of the quickest wins in the tournament, just 2.4 overs. और वो भी एक ऐसी टीम के अगेंस्ट आई है which is sitting at the top of the table. Perhaps not any longer. We'll check the points table. But that is going to hit the Dubai Vipers net run rate. और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ रोशन. पूरे ऑडियंस में there was one team that was smiling looking at that. And that was Chennai Wolves. Certainly they were, and that's how it looked like. You have to talk about Neta. He's a phenomenal bowler, takes hat-tricks for his team, scores match-winning knocks. What more can we expect from him? Yeah, we are seeing a lot of all-round performances, and Netaji is just one of those. I mean, you look at Dubai, they have Mukesh and Manish, and Neta is turning out to be that kind of a performer for New York Apes. 25 of 7, 14 of 5, JD 18 of 4. ये बताता है कि आपका जो टॉप ऑर्डर है, जिसके ऊपर आप डिपेंड करते हैं इतना, they fired today, and they fired in what fashion? 57 for 1. अगर ये पहले बैटिंग कर रहे होते, they could have threatened Delhi's score of 89. I'm pretty sure about that. But you know what? Match dynamics can change around. So from that perspective, well played to New York Apes. That was an important win for them. Absolute important win, and again, courtesy to Kamal and Neta. Of course, Neta was eventually promoted, but we see in the last couple of games, he's really done justice to that. Dubai Vipers. This will be interesting to talk from a perspective where they have been leading the charts. Yeah, I mean, look at that batting scorecard. कुछ different करने की कोशिश की उन्होंने. हरभजन ने कल बहुत अच्छी performance की थी बैट से, तो उनको थोड़ी ज़्यादा responsibility दी, उनको opening कराई, and he paid off. 26 of 12. But you look at the main characters. Roy, 8 of 3, not firing again. Mukesh, 200 plus runs. That was the big dismissal. That knocked out their momentum. He was run out for a golden duck. In fact, that's a diamond duck. He didn't even face a delivery. So from that perspective, Dubai's batting failed, and that's where the match was lost. Dubai there will have to do all that rethinking again. New York Apes, then good bowling from them. Certainly give them that credit for, containing the likes of Dubai. Yeah, JD, look at that. 2 for 4 for him. G2, 1 for 8. हमने प्री-मैच में बात की थी कि इन दो खिलाड़ियों को बाकी सबको सपोर्ट करना पड़ेगा. ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा जब भी इन दोनों से New York Apes will do well, and that is what happened. And on the other side, Dubai Vipers, then nothing much there. I mean, only positives could be Harbhajan getting the runs and also getting the wicket. Yeah, and you know what? This is the new tactic of the Dubai Vipers. They are using Vijay and Harbhajan in the power plays. They are heavily dependent on these guys. लेकिन आज इसको उन्होंने New York Apes ने इसको negative में बदल दिया. They took them for runs. क्योंकि उनको पता है कि जब मुकेश और मनीष बॉलिंग करेंगे, then it can be a problematic thing. तो उन्होंने पहले ही दो बॉलर्स को इतना अटैक कर दिया, there was not much left to do after that. A superb win for New York, and that is going to elevate their run rate. It certainly will, but also from another perspective, from the other teams that are watching, they now know that you get out Manish and Mukesh cheaply, your chances for the games is going to shoot up to 100x. Absolutely. Whenever it happens that you have two players जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा depend कर रहे हो, that your entire tournament is revolving around those two players, and if they fail, you know that you are going to win the game. और ये हमने भी कहा है रोशन, that you get Manish and you get Mukesh, and that is where Dubai lose the game. And there it is, Neta. I think I've really been impressed with the kind of performance which he's had, because, 5 players playing out there, you have to give an all-round performance, and this man has certainly done that. Runs on the board, wickets on the board, I think a complete all-round package. Absolutely, and I was impressed with the way the entire New York team played. उन्होंने एक पैशन दिखाया, उन्होंने एक जोश दिखाया, एक एनर्जी दिखाई कि आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है. रिमेंबर दे आर ओनली प्लेइंग द वन गेम टुडे एज कंपेयर टू दुबई, और उनको रियलाइज हुआ कि आज ये कितना इंपॉर्टेंट गेम है फ्रॉम अ पॉइंट्स टेबल पर्सपेक्टिव, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. एंड देन दे वेंट आउट एंड वन दैट गेम. लुक एट दैट, 15 फॉर द फर्स्ट पार्टनरशिप, 42 of 10. लाइक एक्सेलरेटर के ऊपर पांव रखा और इतना रखा कि एक्सेलरेटर ही टूट जाए. लाइक व्हाट? They were scoring 4 runs on every ball. That is brilliant. Well, then, of course, Nathan, eventually JD joining that party as well, coming down and smacking 4s out of the park. Yeah. And that was really given, the New York Apes that much-needed victory. And this is what Dubai Vipers need to take a relook at. Yes, आप हरभजन को ज़्यादा responsibility दे रहे हो. He's a very shy guy, very nice guy, and he bats really well, very calm and collected. But Roy really needs to buck up. He needs to score a lot more with a lot more strike rate, ताकि मनीष और मुकेश पे थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम हो सके. आप हर मैच पे सिर्फ 2 प्लेयर्स पे रिलाय नहीं कर सकते हो.
Roy certainly has to fire because, I mean, they're trying to, do that shuffle in the batting order as well, but not really working because at the end of the day, it's just the two players who are really they're banking upon. They will really have to do something different if they have to make themselves a much more potential winner. I'm not even talking about making the top 4. Dubai are out there, but again, if you're looking from a perspective of getting your hands on that coveted silverware, you have to fire. For now, of course, we did have 4s and 6s in that game. Let's have a look at the 4s and 6s brought to you by Pulsar NS125 Showstopper. Well, you love the way Netaj actually batted 4s to 4s, 6s and 6s from both sides. That's what really makes their life so easy. We did have wickets, of course, falling as well. More from the Dubai Vipers side. We'll have a look at the wickets brought to you by Lenskart. Well, a fabulous victory for New York Apes out there with 4 wickets. Well, not many of you all might have expected this, isn't it? I mean, all of us, in fact, went with Dubai, but then, of course, it was all a surprise for everybody waiting here. Now, of course, we have that conversation, which is the most interesting part of this show, the points table. Kolkata Hawks, boom, off they go. Yeah, and look at that net run rate for Dubai Vipers. They were plus 0.2. Now they are negative 0.1. ये अच्छी बात है कि उनके पास 14 अंक हैं इस समय, नहीं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है दुबई वाइपर्स के लिए. They have 3 games remaining. They need to get to 16 points, which I think they should, and they will. Otherwise, it's going to be a colossal collapse for Dubai Vipers if they don't get to 16 points from here. It's still in their hands, their destiny in their hands. लेकिन इस रिजल्ट की वजह से चेन्नई को लाइफलाइन मिला है. They still need to win today's game, but there are a lot of permutations and combinations which can go into keeping Chennai alive. They're playing Mumbai first of all. They need to win that game. New York Apes moving up as well. They were down at number 6, I think. Yes, they were down at number 6 at the start of the day, thanks to that win. And look at that run rate. इससे पहले इनका run rate था negative 0.2, and now their run rate is positive 0.3. Well played, New York. Then, of course, it should be well begun, half done. I'm sure it doesn't go that way for them. But again, New York Apes getting that victory, keeping their races alive in this contest. We also, of course, remember Mumbai taking on Chennai eventually for the day. And that's going to be a great contest as well. But for now, of course, we had our host catching up with Milan Goyal from Mumbai. Let's go down. Thank you so much, Roshan and Chetan, for the lovely insights. But देखिए, ये जो tournament है, हम बार-बार बोल रहे हैं कि this is the biggest global e-cricket Premier League, right? तो यहाँ पर मेरे साथ अभी जुड़े हैं मिलन, जो कि मुंबई ग्रिजलीज के लिए खेलते हैं. एंड मुझे पता चला है कि आप लंदन में काम कर रहे थे एंड वो छोड़ के आप खेलने हैं. क्या ये बात सच है? मैं लंदन में जॉब कर रहा हूँ. मैं रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ, बट मैं ये जो भी 15-20 दिन है, मैं इसी के लिए आया हूँ.
मैं घर भी नहीं गया हूँ, मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से यहाँ पुणे आया हूँ एंड जैसे ही ये टूर्नामेंट ख़त्म होगा नेक्स्ट दिन एक रात मुझे घर पे रुकने का मौका मिलेगा, नेक्स्ट दिन मेरी फ़्लाइट वापस लंदन के लिए है। राइट तो आप मुझे बता रहे थे कि आप जो है बाइक मतलब बहुत आपको पसंद आई है, लेकिन मुझे ये बताइए आप बाइक चलानी आती है आपको? सच बोलो या झूठ बोलो? सच बोलना पड़ेगा, बाइक का सामना। सच बोलो तो बाइक चलानी नहीं आती मुझे, कोई Okay. थोड़ा सा डर बैठ गया था बचपन में, लेकिन अब ये जो पल्सर NS 125 देखी है बहुत ही अच्छी और सेक्सी बाइक लग रही है। जी हाँ। और ये जीतने की उम्मीद है और जीत के जाऊंगा और यही बाइक जीत के मैं सीखूंगा और ये चलाऊंगा मैं। ओहो, तो सीखोगे किससे आप? लेकिन सीख तो लूंगा। देखो लेंगे। जैसे ये गेमिंग जैसे सीख ली है, गेमिंग करते करते यूट्यूब चैनल करते करते यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो वही करते करते वो एक मौका है और टॉन्ट कर सकता हूँ मैं सबको कि भाई देखो, फ्लॉन्ट कर सकता हूँ कि भाई देखो गेमिंग खेलते खेलते मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है और मैं एक बाइक भी जीता हूँ और ट्रॉफी भी जीता हूँ। लेकिन बाइक तो आपको यहाँ पे मिलेगी ना, तो आप तो शायद से लंदन, आपने जो बोला कि आप लंदन वापस जा रहे हो, फिर वहाँ पे जाके आप क्या करोगे? लंदन बाइक से जाना थोड़ा मुश्किल नहीं रहेगा? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है वो तो मुझे ओके। लेकिन देखिए ये बाइक मैं अपने भाई को दे दूंगा और वहाँ पे मैं एक नई पल्सर NS 25 ले लूंगा। इतनी पसंद आ गई? इतनी पसंद आ गई तो वहाँ पे ले लूंगा। एकदम स्वैग दिखाने वाली बाइक है। दिखाने। मेरा आखिरी सवाल, आखिरी बात मेरा आपसे यही रहेगा कि क्या आपको मोटिवेट करता है इतना डेडिकेशन दिखाने के लिए? कोई आपका कोई मोटिवेशन फैक्टर या फिर आपकी वाइफ जो है मैम आपको मोटिवेट करती है कि हाँ आप जाओ खेलो, आई एम हियर, आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर यू? या सो एटलीस्ट जैसे पता है आई एम द मोस्ट सीनियर प्लेयर ओवर हियर, मैं लास्ट सेंचुरी में पैदा हुआ हूँ, जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट बचपन से वो जो क्रिकेट खेलने का जुनून था, अभी भी मैं रेगुलरली खेलता हूँ, लेदर बॉल क्रिकेट एवरीथिंग, आई डू इट रेगुलरली। मैं अभी जैसे लंदन में 1 महीने पहले गया था, वहाँ पे जाके मैं लॉर्ड्स में खेल के आया हूँ बाय द वे। ओ भाई मतलब एक एक करके ना मैं ऐसे इंटरव्यू के लिए किसी को बुलाता हूँ, मुझे बुली करके चले जाते हैं। तो वही एक मोटिवेशन था। क्रिकेट फिर लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन में ग्राउंड पे जाके तो क्रिकेट खेल नहीं सकते थे, तो कुछ गेम सर्च करा था, उसमें रियल क्रिकेट 20 था तभी, वो शुरू किया, वो सीखना चालू किया। मल्टीप्लेयर था उसमें, हमारे देवेंद्र पाजी है उनका यूट्यूब चैनल था, उनसे सीखा है और बहुत सारे चैनल थे। तो फिर मैंने सोचा मैं भी अपना चैनल चालू करता हूँ, बहुत टाइम है लॉकडाउन में, तो खेल रहे, अच्छा खेल रहे, तो वो चैनल चालू किया। जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पे और जो भी घर पे बैठ के देख रहे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है चैनल पे, तो चैनल के अच्छा ग्रोथ हो रहा है। हाँ मैं रेगुलरली नहीं हो पा रहा हूँ कि बिकॉज ऑफ माई जॉब, बट देन ये खेलते खेलते कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम पे आएंगे और इतना बड़े स्टेज पे मेरा इंटरव्यू होगा, मैं टीवी पे लाइव आऊँगा, वो एक अच्छा that's one of the motivation ends। एक बार जोरदार तालियां बनती है यार मिलन के लिए। वेल आखिरी, अभी पक्का आखिरी, ठीक है, पक्का आखिरी वाला स्टेटमेंट है। आपके जो सारे फैंस देख रहे हैं, लाइक आपके फैमिली मेंबर्स जो देख रहे हैं, आपके वाइफ देख रहे हैं, सो उनके लिए आपका कोई मैसेज रहेगा? उनके लिए है कि जो मेरी वाइफ है मुझे बहुत सपोर्ट करती है। यस, जब स्टार्टिंग में जब हुआ था कि मैं रेगुलरली क्रिकेट खेलता था, थोड़ा इशू हुआ था, बट देन नाउ शी नोज क्रिकेट, हाँ उसको पता अभी चल गया कि क्रिकेट है, तो ही विल एंजॉय एंड ही वुड बी लाइक, कोई बोलते हैं ना कि हमारा भी होता है कि क्रिकेट में थोड़ा अपना फ्रस्ट्रेशन भी निकलता है, तो शी नाउ नोज, माई फैमिली ऑल्सो सपोर्ट्स, माई मॉम, ब्रदर, एवरीवन सपोर्ट्स इट। और नाउ यस, मेरी एज इतनी हो गई है कि कोई मुझे बोल भी नहीं सकता भाई तू ये कर, वो कर, ये कर। अच्छा खासा जॉब भी चल रहा है मुझे, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, बट दिस इज एन हॉबी, पैशन, एंड आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर। मुझे भी लगता है कि मैं इसमें अपना करियर और नया, लाइक आई कैन मेक अ न्यू स्टार्ट इन माई न्यू करियर इन दिस जर्नी। थैंक यू सो मच मिलन। वेल उसी के साथ हमारा देखिए पहला मैच हो चुका है, एनालिस्ट बता चुके हैं आप लोगों को कि क्या क्या हुआ था, लेकिन दूसरे मैच जाने से पहले प्लेयर्स थोड़ा सा तो रीसेट करके आएंगे माइंड, तो मैं इसीलिए एक छोटे से ब्रेक के बाद आप लोगों से वापस मिलने वाला हूं। सी यू गाइस राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। Mania's here. Maniacs wanted. Piyush, hey, I was just on Lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण, रुपीज है। I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? करण, ये बढ़िया प्राइस है। It's only because we don't have middlemen. 90,000? आप कहीं और से ले लो। 80,000. I'm going. Bye. अमीरों की हाई लगेगी तुझे। फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन। लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप। लेकिन ये पाइप
चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।